दोस्तों आज मैं आपको इस टेम्परेचर कंट्रोलर के बारे में बताने वाला हूँ। ये है W1219 टेम्परेचर कंट्रोलर। दोस्तों वैसे तो इसे पोल्ट्री फार्म्स, इंक्यूबेटर्स के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, वही इसका मेन एप्लीकेशन है, लेकिन इसका यूज़ आप रूम टेम्परेचर या फ्रीजर के ऑटोमेशन के लिए भी कर सकते हैं। 60 mm लंबा और 50 mm चौड़ा इसका डायमेंशन है। कंट्रोल रेंज दोस्तों इसमें -50 डिग्री सेल्सियस से +110 डिग्री सेल्सियस है। 10 किलो ओम्स का NTC वाटरप्रूफ सेंसर लगाना होता है इसमें। इसके साथ ही आता है ये DC 12 वोल्ट पर इसको चलाना होता है इस सर्किट को। 10 एम्पियर तक मैक्सिमम आउटपुट लोड इस पर आप लगा सकते हो। डिले इसमें 0 से 10 मिनट का आप सेट कर सकते हो और टेम्परेचर कैलिब्रेशन -10 डिग्री सेल्सियस से +10 डिग्री सेल्सियस है इसमें। इसकी सेटिंग और वायरिंग में आपको डिटेल में करके बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तब तक हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the phone, so I built my towers tall, wandering through these empty halls. Break the cycle now. Walls are coming down. I gotta make it out. Yeah, 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 yeah. Ooh.
Gotta save me from myself. This emptiness, it hurts like hell. My good intentions let me down. पर्सनल इंक्वायरी के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी हमें डीएम कर सकते हैं, उसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। ऐसी इन्फॉर्मेशन से भरे वीडियोस अगर आप फ्यूचर में भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपके सवाल, डाउट्स या सुझाव हमें कमेंट्स करें, हम पूरी कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड जय हिंद।